Can someone confirm? Yes. Okay. So we have seen order creation, we have seen delivery creation, and today we will start with billing process. Like you know, in sales, first order will be created, and before order you have inquiry and quotation document. उसके बाद में सेल्स ऑर्डर बनेगा. सेल्स ऑर्डर के बाद में डिलीवरी होगी. डिलीवरी में वी हैव टू स्टेप्स. फर्स्ट इज डिलीवरी क्रिएशन एंड देन पोस्ट गुड्स इशू. पोस्ट गुड्स इशू के टाइम पे हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी. और देन आफ्टर पीजीआई वी विल इनवॉइस दिस कस्टमर. ओके, सो इनवॉइस हम क्रिएट करेंगे. इनवॉइस को ही बिल कहते हैं. सो बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों का नेम यूज होता है. बोथ आर सेम थिंग्स. इफ समवन इज saying कि सेंड मी इनवॉइस और सेंड मी बिलिंग डॉक्यूमेंट, बोथ आर सेम. सो बिजनेस में नॉर्मली इनवॉइस यूज करते हैं, बट इन एसएपी टर्म्स इसको बिलिंग, वी से इट एज बिलिंग डॉक्यूमेंट. ओके, बट बोथ आर सेम थिंग्स. सो okay, what is purpose of this billing? Invoice are transaction signifying a payment that your customer owes you. बेसिकली जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, सो उसको कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए वी नीड सम डॉक्यूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड इनवॉइस. सो दिस इनवॉइस वी विल सेंड टू कस्टमर and customer will pay against this invoice. Invoice is a commercial document issued by seller to buyer. Okay, so seller, like who the seller will send this to your customer or buyer, and it will have all the product or services that you have taken. प्राइस किस प्राइस पे हमने बाय किया है, तो सारी चीज़ें उसमें लिस्टेड होंगी. एंड इट विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग. An invoice indicate that unless paid in advance, payment is due by the buyer. सो इसमें जो भी हमारा पेमेंट पेंडिंग है कस्टमर से, वो इनवॉइस में लिस्टेड रहेगा. एंड इनवॉइस आर ऑफर कॉल्ड एज बिल्स. सो इनवॉइस, बिलिंग, बिल्स ऑल आर सेम थिंग. प्रिपरेशन ऑफ बिल कैन बी रेफर टू एज बिलिंग प्रोसेस. सो इसको हम बिलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं. Now, what is use? Invoice is a legal document. So it is a legal document, and so customer is bound to pay जो भी हम उसको invoice भेज रहे हैं, because he has taken that product or services. So now it is a legal document used for working out of sale statistics, profit and loss. ओके, सो जो इनवॉइस का डेटा रहेगा उसके बेस पे हम बहुत सारा रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं. लाइक आपका सेल्स रिलेटेड रिपोर्ट्स बन जाएंगी, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स. तो इसका जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट रिपोर्ट्स. इनवॉइस आर द प्रूफ सेल, हेंस कैन गिव डिटेल ऑन टैक्सेस. तो इनवॉइसेस में हमारा टैक्सेस वगैरह भी मेंशन्ड होगा, तो ये हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी अपना इनवॉइस डिटेल्स वी कैन शेयर टू देम. ओके, चैलेंजेस क्या है? टू मेंटेन द करेक्टनेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस, टैक्स, पेमेंट टर्म, बिलिंग इंटरवल्स. सो वेन एवर वी आर क्रिएटिंग इनवॉइस, तो जैसे अलग अलग कस्टमर्स के लिए हम अलग अलग प्राइसिंग कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन चैलेंज कि हाउ टू डिफरेंशिएट प्राइसिंग. फिर अलग रीजन्स के टैक्सेस अलग हो जाएंगे, लाइक कंट्री वाइज और रीजन वाइज. पेमेंट टर्म्स सबके अलग अलग हो सकते हैं कस्टमर्स के. सो देन रिपोर्टिंग, कैंसलेशन, सो डिफरेंट चैलेंजेस विल बी देयर. ओके, नाउ बिलिंग फंक्शंस. तो नॉर्मल हमारा जो प्रोसेस है दैट इज फर्स्ट वन. प्रोसेस वन, फर्स्ट ऑर्डर इज क्रिएटेड. आफ्टर ऑर्डर क्रिएशन डिलीवरी इज क्रिएटेड एंड देन you will create invoice. So this is my standard order to cash process. Okay, this is one scenario. आपने invoice create कर दिया, फिर आपका invoice creation के टाइम पे accounting document बनेगा, and this accounting document is used by your finance team. सो इनवॉइस बन जाएगी, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एंड दिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट is sent to your, or it is used by the accounts team. So this is one scenario. Second scenario is order बना और order के बाद में invoice बन गया. So this is my service sale scenario. जब हम service order बना रहे हैं
और उसके बाद में डायरेक्टली इनवॉइस कर रहे हैं। इसमें कोई डिलीवरी नहीं है, बिकॉज दिस इज हियर वी आर सेलिंग सर्विसेज। फर्स्ट केस में क्या था, इसमें हमारा फिजिकल प्रोडक्ट था, सो वी आर ऑल्सो डूइंग डिलीवरी प्रोसेस। देन 3A and 3B, ये प्रोसेसेस हम अभी आगे देखेंगे व्हेन वी कवर अनदर मोर स्पेशल सेल्स प्रोसेसेस। क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट और डेबिट मेमो रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए हमें किसी कस्टमर को क्रेडिट इशू करना है, उसको हमें कुछ क्रेडिट देना है, मे बी हमने उससे ओवर चार्ज कर लिया है। सो वी विल क्रिएट अ क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ योर सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट। इट इज़ उसका ऑर्डर टाइप क्रेडिट मेमो का, वी विल सेलेक्ट द क्रेडिट मेमो ऑर्डर टाइप, एंड उसके बेस पे वी विल क्रिएट अ क्रेडिट मेमो। ओके, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट दिस इज अ सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और क्रेडिट मेमो दिस इज योर बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप। सो इसका पर्पस ये है कि किसी कस्टमर को हमें क्रेडिट इशू करना है, देन वी कैन यूज दिस प्रोसेस। दूसरा है डेबिट मेमो रिक्वेस्ट। मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को अंडर चार्ज कर दिया है बाय मिस्टेक, एंड वी हैव टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम हिम। तो हम एक डेबिट मेमो रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, और उस डेबिट मेमो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में एक डेबिट मेमो क्रिएट करेंगे, एंड दिस डेबिट मेमो विल बी सेंड टू कस्टमर, एंड इसके अगेंस्ट में वी विल कलेक्ट द additional payment from the customer. So 3A and 3B, these two processes are special sales processes that we will cover in the coming sessions. ठीक है। देन कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट। सो अगर कोई इनवॉइस बन गई है तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल में क्या होगा कि जो भी आपका अकाउंटिंग एंट्रीज पास हुई हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। So cancellation, like cancellation of invoice, that is also possible. So creation of invoices and pro forma invoices on the basis of delivery and services. So हम invoice बनाते हैं, and pro forma invoices बनती हैं in some cases. Pro forma invoices जैसे it is a copy of your actual invoice। तो मान लीजिए हमें ट्रांसपोर्ट वाले को या फिर किसी वेंडर को कुछ इनवॉइस देना है, नॉट नॉट द ओरिजिनल इनवॉइस बट अ कॉपी ऑफ इनवॉइस, तो हम उसका एज अ प्रोफार्मा दे सकते हैं। प्रोफार्मा इनवॉइस में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होती है, मतलब वी कैन क्रिएट प्रोफार्मा इनवॉइसेस मल्टीपल टाइम्स बट इट विल नॉट अपडेट योर फाइनेंशियल एंट्रीज। दिस इज यू कैन से काइंड ऑफ योर pro forma, like the name is saying कि it is just a duplicate invoice, or it will not impact the financial entries. Transferring posting data to accounting, financial accounting. So once my invoice is created, then accounting document is created, and this is sent to your finance team. Creation of credit and debit memo on the basis of request. So credit memo request and debit memo request, and then cancellation process. Cancellation is also possible for a invoice of invoice. अभी बिलिंग प्रोसेसिंग, दे वी हैव दिस थ्री डिफरेंट सिनेरियोज। फर्स्ट वन इज सेपरेट इनवॉइस फॉर ईच डिलीवरी। सो लेट्स से देर आर टू लाइन आइटम्स इन वन ऑर्डर, और उनकी दो डिलीवरी बन गई हैं। ओके, सो व्हेन वी हैव डिफरेंट शिपिंग पॉइंट्स और डिफरेंट शिप टू पार्टीज, सो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। अगर वो दैट विल कॉज योर डिलीवरी स्प्लिट। मान लीजिए हमारे दो आइटम्स हैं और दोनों के शिपिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। सो इन दैट केस डिलीवरी स्प्लिट विल हैपन, देयर विल बी two different deliveries will be created, and then for every delivery you are generating one invoice. Okay, so this scenario is separate invoice for each delivery. So depending upon your deliveries, that many invoice you will create. Then second scenario is invoice split. Now here what happens, you have one sales order, you have there is one single delivery, but at the invoice level, this is two different invoices are created. Maybe let's say payment terms are different, or pairs are different. So different, there are different criteria on basis of which your invoice will be split. सो फॉर वन डिलीवरी यू कैन हैव टू डिफरेंट इन्वॉइसेस। मान लीजिए डिलीवरी में आपके दो लाइन आइटम है, और दोनों में पेमेंट टर्म्स अलग अलग है या पेयर अलग अलग है, तो उसकी दो डिफरेंट इन्वॉइस बन जाएंगी, इन्वॉइस स्प्लिट। सो दिस इज माय इन्वॉइस स्प्लिट सिनेरियो।
थर्ड इज कलेक्टिव इनवॉइस सिनेरियो। इसमें क्या है कि मल्टीपल सेल्स ऑर्डर होंगे, देन यू विल हैव मल्टीपल डिलीवरीज। मल्टीपल डिलीवरीज को हमने कंबाइन करके वन सिंगल इनवॉइस बना दिया है। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल हैव scenario one will take place when you will have one sales order, and even delivery will be one single delivery and then one single invoice. So that scenario is the uh, most common scenario and mainly used. So by there are different ways to create a billing document, by specifying the document, sales order or delivery, by processing manually through billing due list, by having the system process billing due list automatically as a background task. तो इसमें सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट बिलिंग ड्यू लिस्ट एक ट्रांजेक्शन है, वी विल गो टू दैट रिपोर्ट, इट विल शो यू ऑल द डिलीवरीज फॉर विच पीजीआई इज पोस्टेड। सो वहाँ से जाके हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन create directly from VF01, or third option is we can create as a background job. So background job basically when we want to perform some transactions in the background, then this is background jobs are scheduled. Basically this will be done by your basis team. Yeah, any questions? Hmm. नहीं, ये एसडी का ही पार्ट है। ये एसडी का ही पार्ट है, मतलब देखिए ये इनवॉइस वगैरह मतलब टेक्निकली इट इज पार्ट ऑफ एसडी, बट इन रियल टाइम जैसे आप बिजनेस में जैसे अपने कंपनी में देखोगे या एनी कंपनी यू विल सी, तो इनवॉइस जो क्रिएशन है दैट इज डन बाय योर फाइनेंस टीम। ओके, बट जो एज अ पार्ट ऑफ एसडी स्कोप, एसडी मॉड्यूल में हमें इनवॉइस क्रिएशन भी करना होता है। इनवॉइस क्रिएशन या इनवॉइस से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं तो इट विल कम टू एसडी। ओके, इनवॉइस के बाद में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे अगर आपने अपने सिस्टम्स में देखा होगा, एक जब एज सुन एज इनवॉइस इज क्रिएटेड, बैकग्राउंड में एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट दैट इज पार्ट ऑफ योर फाइनेंस टीम। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपकी फाइनेंस टीम दे विल चेक दिस डॉक्यूमेंट और उसके अगेंस्ट में दे विल रिसीव द पेमेंट। ओके, ओके, सो ओके, देन यू हैव इंटरफेस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो जैसे हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट बनेगा, लाइक आई मेंशन्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड। एंड अगर आपका जैसे कॉस्टिंग मॉड्यूल, सीओ मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेड है, then CO controlling documents will also be created. So as soon as you create save invoice, in background system will generate accounting document and controlling document, and both these documents are for your finance team. It is they are related to your FICO module. ओके, सो जैसे बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो कस्टमर का 114 this much customer has to pay. So once we receive this it will be posted to your receivable account। और इसमें आपका जैसे जो आपका सेलिंग प्राइस है उतना रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा, जो टैक्सेस है टैक्स अकाउंट में चला जाएगा। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन कौन से अकाउंट में जाना है, दिस योर एफआई टीम विल टेल कि कौन सा जीएल अकाउंट में जाना है। दिस they will inform us। Okay, so what we should know कि when we save the billing document, accounting document will be created, and this accounting document will be is used by the finance team। Now billing document structure, what is there? It is it has header and item data. Header data, it is applicable to all the line items, and item data is applicable to that specific line item. So, and this is same like we have seen in sales order header, sales or sales document and delivery document। अब आपका हेडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है? हेडर इंफॉर्मेशन लाइक आपका पेयर नंबर, देन यू हैव बिलिंग डेट, नेट वैल्यू ऑफ एंटायर बिलिंग डॉक्यूमेंट, terms of payment and incoterms, pricing elements, currency। So this is all my header information। और भी इन header information होती है that we can see directly in the invoice document।
और आइटम लेवल इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक योर मटेरियल नंबर, बिलिंग क्वांटिटी, वेट एंड वॉल्यूम, प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल आइटम, नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। सो जो भी आइटम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है दैट इज एट द आइटम लेवल. Then comes the copy control. So copy control, like we have seen from sales to delivery, we have to maintain copy control. Okay, like from inquiry to quotation, quotation to sales order. So copy controls are applicable here also. जैसे हमारा delivery के बाद में invoice बनेगा तो delivery to invoice copy control will be there in the background. So when we see the copy control, entry will be existing from LF to F2. So LF is my delivery type, standard delivery type, and F2 is my billing type. So LF to F2 copy control will be there. So this is my header level copy control, and इसमें फिर item level का copy control. So this concept is same. So delivery to your billing document, copy control will be there. Now configuration, where we can see this configuration, go to sales and distribution SPRO, and then here in billing document, go to billing document types. Billing document types में हमें जो जो different billing document types that we can see, the number ranges we can define. Okay, copy control we can maintain here. Blocking reasons, that if we want to block invoice in some cases, that we can do. ओके नाउ सो बिलिंग टाइप्स, जैसे हमारा ऑर्डर टाइप्स अलग अलग तरह के होते हैं वैसे ही बिलिंग टाइप्स भी अलग अलग होंगे. जैसे आपका F2 बिलिंग टाइप है, दिस इज माय स्टैंडर्ड सिनेरियो व्हेन यू आर क्रिएटिंग इनवॉइस विद रेफरेंस टू डिलीवरी. तो उसमें F2 इनवॉइस आपका यूज़ होगा. ओके जैसे बीवी वाला आपका यूज़ होगा जब आप कैश सेल इनवॉइस क्रिएट करोगे तो उस समय बीवी इनवॉइस क्रिएट होगा. देन G2, अगर आप क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो G2 इनवॉइस टाइप. सो लाइक सेल्स प्रोसेस वाइज बिलिंग टाइप्स विल आल्सो डिफर. जैसे हमारे अलग अलग ऑर्डर टाइप्स, डिलीवरी टाइप्स होते हैं, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलिंग टाइप्स विल बी देयर. But mostly you will be using F2. F2 is your delivery related output, delivery related billing type. हाँ, any question? हम्म. हम्म. Yes. हम्म. नहीं, वो F5 एक्चुअली ये कैंसिलेशन डायरेक्टली F5 का नहीं है. F5 इज फॉर योर प्रोफॉर्मा इनवॉइस. F5 और F8 आपका प्रोफॉर्मा के लिए बनता है. मतलब ये बिलिंग टाइप के फंक्शन बता रहे हैं कि बिलिंग टाइप व्हाट इट कंट्रोल्स. जैसे कैंसिलेशन होगा, नंबर रेंजेस, आउटपुट, तो डिफरेंट चीज़ें जो आपकी कंट्रोल करती है बिलिंग टाइप. बट जो F5 है दिस विल क्रिएट योर प्रोफॉर्मा. जैसे प्रोफॉर्मा हमें बनाना है, ऑर्डर बेस्ड प्रोफॉर्मा इज F5 एंड डिलीवरी बेस्ड प्रोफॉर्मा इज F8. ओके जो, हाँ, और कैंसिलेशन वाले जो होते हैं वो नॉर्मली S से रहता है, S करके डॉक्यूमेंट रहेगा व्हेन यू कैंसिल इट. ओके सो दैट आई विल शो यू इन सिस्टम, वन सिस्टम इज बैक, अगर अभी देख लेंगे. आ गया, ठीक है ठीक है, अभी तो फिर देखते हैं फिर. ओके जैसे फिर देन वी हैव F1. अभी जैसे ऑर्डर टाइप, जैसे आपने सेल्स सर्विस ऑर्डर क्रिएट किया, देन उसका इनवॉइस टाइप विल बी F1. So after creating service order, we will create F1 order type, F1 invoice. So this is my order related invoice. F2 is your delivery related invoice. F2 document type जो आपका है, that is delivery related document type. Okay, then intercompany sales, when we will see that, so intercompany sales is document type IV. Okay, billing document type is IV. Cash sales का document type is BV. कैंसिलेशन, ओके, लाइक S1 इज द कैंसिलेशन इनवॉइस टाइप. से आपने F2 को कैंसिल किया तो S1 टाइप का इनवॉइस बनेगा, कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट.
फिर G2L2 आपके क्रेडिट और डेबिट मेमो इनवॉइस। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइस हैं, ये सब इनवॉइसेस हैं या बिलिंग टाइप्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज के बेस पे अलग अलग आपके बिलिंग टाइप्स हैं। देन F8 इज़ योर प्रोफार्मा इनवॉइस। तो जैसे आप डिलीवरी के बेस पे जब आप प्रोफार्मा क्रिएट कर रहे हो, देन वी विल यूज़ F8। और अगर आप ऑर्डर के बेस पे प्रोफार्मा कर रहे हो, देन वी विल यूज़ F5 इनवॉइस टाइप। देन RE क्रेडिट फॉर रिटर्न्स, अगर रिटर्न्स के अगेंस्ट में हम कस्टमर को क्रेडिट रिटर्न कर रहे हैं, देन वी विल हैव RE बिलिंग टाइप। इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट, ये इनवॉइस करेक्ट करने के लिए भी यूज दिस, तो इसमें दिस इनवॉइस टाइप विल बी क्रिएटेड। सो या different document billing types are there. So F2 mostly you will be using F2 billing type, जैसे आप when you are creating invoice, so mostly you will be using F2। और F2 के डिटेल्स में here you can see number ranges internal। so internal number range is possible here, only that is possible। then document category is M। now here you have this posting block। posting block को अगर हमने यहाँ पे चेक कर दिया, सो आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो व्हेन वी सेव द इनवॉइस, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट will be blocked by default। someone has to go and release this invoice, तब आपका determination। so error in account determination means system is not able to identify the GL accounts। so in VKOA transaction, this GL accounts will be maintained, account determination will be done, and then automatically your accounting document will also be created। So once that is maintained, go to accounting document will be created here, and then you can see that information। So if I want to analyze what happened here, let's go to environment, accounting determination analysis, and then revenue account determination। So here PR00, no GL account found for KOFI। Okay, so GL account is not determined. And I think we did this session accounting determination. VKOA is the transaction we will maintain here. And let we can select any of this access to maintain, to determine. Okay, so let's see what is our sales organization was. NG00. What is my sales organization? Okay, so we can maintain our entry here, then account will be determined. Accounting determination will take place. So our chart of account, what is our chart of account? Okay, accounting determination KOFI. It is INT KOFI AINT LG00. This, let's try now. Okay, this is the block. When your billing document is blocked or it is not automatically released, then from here we will release this. Okay, accounting, still it is showing accounting error. Okay, okay, anyways, so let me search for another invoice where we will have accounting document. Okay, not here also.
Okay, so this is let's say this is one invoice. If I go to accounting here, it will take me to accounting document. So this is a sample accounting document. It will have your company code, then your physical year, for which period represents your this is financial year and then period. Okay, and then this is the posting date, on which date it is posted. And here you will have accounts, GL account. So this is one account. Okay, so debit and credit. Yeah, it should be actually here. This should be 11, but somehow it is showing 8. So period represents your month. Okay, but somehow something it is wrong here. So it is month year is okay, but period should be 11 here. And then here you will see your different GL accounts. Okay, so these four are my GL accounts, and you will have debit and credit entries. So now this is for your finance team. So here you can see header details. GL account you can create in FS00, but sometimes one after another error it will come. So you can try creating FS00 and use this option with template. Okay, and just copy from the existing GL account. So take any existing GL account, enter your company code, and then try to save that with template option. Okay, well,